Some impossible tasks are completed by divine blessings, patience, and unwavering commitment. By successfully completing this Herculean rescue operation, India has set an example for the rest of the world. After 17 days of intensive coordination, the country's longest ever running rescue operation was completed successfully without a single life lost. Well, here is to honoring the heroes of Uttarkashi. Please have a look. On November 12, a section of the Silkyara Tunnel in Uttarkashi came crashing down while under construction. 41 workers were trapped inside on the day of Diwali, and for 17 days they waited for help. They were trapped, but they knew India's prayers are with them. It was the National Disaster Response Force that arrived first at the spot. These brave rescuers battled from the very first minute. Operations started with excavators and auger drilling machines. But unfortunately, machines did not stand the test of nature. The rough terrain caused drilling delays and machines broke down. 6 different plans executed. Rescue attempted from 3 locations in different ways, but none of them worked. And when all else failed, it was the 12 rat miners who brought cheer to a nation in prayers. On 28 November, rat hole miners broke through the final stretch of debris and pushed a pipe to the trapped workers manually, finally resolving the tense situation. One by one, all those trapped crawled out to cries of joy and sighs of relief. CNN News 18 also salutes the heroes inside the tunnel. Gabbar Singh Negi was the most experienced among those trapped. As tunnel foreman, he knew it was his responsibility to keep the morale high. गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला. As a billion Indians watched and celebrated the great Himalayan rescue, the unwavering perseverance and hard work of all those who played a part shone brightest. CNN News 18 honors the heroes of Uttarkashi. Huge round of applause for the heroes of Uttarkashi. I'd like to invite on stage Munna and Bablu, the rat miners. I'd like to invite on stage Gabbar Singh Negi and Sabah Ahmed, and also the DG of NDRF, Shri Atul Karwal. And to present the award, may I please invite Minister of State, Dr. Jitendra Singh, to please come up on stage. Ladies and gentlemen, the heroes of Uttarkashi, can we have a huge round of applause for all of whom they've come? All of India was riveted for the 17 days that they were caught in the rat hole, and they were rescued by... Alright, let me request Dr. Jitendra Singh to first present the award to the NDRF DG, Mr. Atul Karwal. Sir, if I can have a word with you, Mr. Karwal. You and your team were there from the night of Diwali when these construction workers were stuck in that tunnel. What was the brief that you were given, and how hopeful were you that yes, first week, second week, 17 days, how hopeful were you that yes, we will be able to get through to them? The brief was to rescue them at any cost. The whole nation was behind us. Any resource we wanted, any machinery, any manpower, any know-how, not just from the nation, but internationally as well, was made available. That was a huge, huge thing. We were given a blank check. Ask what you want, but get them out alive. And during those days, we were hopeful, yes. Nature kept throwing more and more challenges on our path, and I personally feel the mountain relented eventually and let us go. The mountain relented. May I now request Dr. Jitendra Singh
to mention and give the award to the heroes of Uttarkashi, to Munna and to Vakil. And to the foreman Gabbar Singh Negi and his colleague Sabah Ahmed. Dr. Singh, I'll give you a mic as well, and I'll give a mic to Foreman Negi and Sabah Ahmed as well. Dr. Singh, we saw for 17 days and nights, all of India, we were praying for the safety and for the security and the safe release of these construction workers. Did you at any point feel ki ho nahi paega, we won't reach till then? I think as was being mentioned by him, the whole nation was with them, and I think most of all we had the faith in the inherent fortitude, inherent endurance, inherent commitment with which each of the Indian is born, which comes to every Indian as a part of the legacy, which is, I think, also constitutes the spirit of Bharat, the eternity of Bharat, which possibly Iqbal described as kuch baat hai ki hasti bitti nahi hamari. So that truth which sustains India because of its sanskar, its sankalp, I think is the best represented by these friends of ours who have actually not only exemplified Bharatiyata in its best form, but also set an example for all of us to remain composed and committed regardless of the circumstances around. Hats off to them and very well deserved. I must compliment CN for having duly recognized them. You have, by rewarding them, done something which each one of us should have done. So I think you have rewarded them on behalf of each and every Indian. Thank you. Negi Saab, Sabah ji, आप वो 17 दिन के लिए कैसे आपके लोगों को मोटिवेट करके रखे? कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ लोग गाना गा रहे थे. बहुत कठिन है वो 3 हफ्ते ऐसे लोगों को उनका स्पिरिट मोटिवेट करके रखना. कैसे किया आपने वो 3 हफ्तों के लिए? सबसे पहले तो मैं CNN न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और इनकी समस्त कार्यकर्ताओं का, न्यूज़ 18 के परिवारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि हमें इस मंच पर आमंत्रित किया है और इतना बड़ा अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों, देवियों एवं सज्जनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. देखिए, ये तो हम लोग, आप लोग सब मालूम ही है कि इतने दिन हम लोग कैसे रहे. वो घड़ी तो बहुत मुश्किल की घड़ी थी, बहुत कठिन की घड़ी थी. उस घड़ी को तो याद करते हुए आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. उस घड़ी को बयां करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल के दिन थे वो. देखिए, दुनिया तो बाहर में, क्योंकि हम लोग की दुनिया एकदम उस टाइम एकदम अलग हो चुकी थी. दुनिया से हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और न तो हमें कोई समझाने वाला था, न कोई हमें देखने वाला था. और बाहर में क्या चल रहा है हमें कुछ क्षणों के तो कुछ मालूम ही नहीं था कि बाहर में क्या चल रहा है. क्योंकि जो आदमी बाहर से, जो लोग बाहर से काम कर रही थी, जो टीम बाहर से काम कर रही थी, तो उनको तो परेशान करने वाले थे. उनका तो जोश वैसे भी दुगना हो जाता था, लेकिन हम लोग को जोश, हम लोग को कोई बोलने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था. और उल्टा जो है हमारे जो जितने भी साथी थे हमारे पास में आते थे कि सर आप कैसे करेंगे, कब निकलेंगे. वो लोग भी बार बार जिस तरह के सवाल आज हो रहे हैं हमारे साथ में, उसी तरह के सवाल उस टाइम भी हमसे होते थे कि सर हम लोग बाहर कब जाएंगे. उनका रोना धोना, उनको समझाना, उनको कैसे मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल का टाइम था. क्योंकि जब बाहर से आदमी काम करता है तो उसको पता है कि हम तो सेपरेट हैं, कैसे भी यहाँ से घुसेंगे तो निकल जाएंगे और हमको बचाने वाले हैं. लेकिन हमें ये सब मालूम नहीं था कि हम बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे, ये हम कैसे बाहर आएंगे, क्या करेंगे, बाहर से क्या कंडीशन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमको दिखाई नहीं दे रहा था जी. लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा के फिर बोलते थे कि वह ठीक है, आप लोग निकलेंगे, उनको समझाते थे. और बाहर में जो हमारे साहब लोग थे, मुख्यमंत्री साहब लोग थे और बड़े बड़े साहब लोग जो भी हमसे कॉन्टेक्ट करते थे, हम इस तरह से बात करते थे कि उनका जो है जोश, उनका जोश बना रहे. हमें डर था, इस बात का डर था कि उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो. आप उनका मनोबल बढ़ाते, उनका मनोबल हम बढ़ाते थे ताकि ये लोग कि बाहर से उनके काम में कोई दिक्कत आए, वो लोग काम न कर पाए. और कहीं हम लोग, हमारे जो साथी लोग हैं सारे अंदर ही न फंसे रहे हैं. क्योंकि मेरे एक 40 साथी थे,
उस टाइम एक इस तरह की नदी बह रही थी कि हमको पता नहीं वो कहाँ जा रही, लेकिन उस बहाव में मैं भी बह रहा था, लेकिन मैं जो है उनको कोशिश करता था कि लोग किनारे लगा जाए, क्योंकि सत्य से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे अंदर एक सत्यता थी जो जिसके कारण मैं आज आपके सामने में खड़ा हूं। And of course, how can we forget the last stretch, the last 26-30 hours? It was the deep shaft miners who actually made that final push and got to the trapped construction workers. So वकील और मुन्ना, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जिंदगी पूरी तरफ मतलब बदल गई है उस दिन के बाद? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा CNN न्यूज़ का, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया और सम्मानित किया गया। और मेरे बच्चे रो रहे थे शाहरुख सर आपके मिलने की वजह से, और रुला दिया आपने सर आज उनको बहुत ज़्यादा। जिंदगी तो सर इतनी बदल गई है हमारी, शाहरुख सर से मुलाकात हो रही है और आप जैसे बड़े बड़े लोगों से बातें हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के बीच में आके इतना सम्मान और इतनी इज्जत पाके मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप सभी लोगों का और CNN न्यूज़ का, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप चाहेंगे कि शाहरुख साहब आपकी जिंदगी के बारे में और इस घटना के बारे में एक मूवी बनाएं? अरे दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है सर, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा। श्योर। बट सर एक ख्वाहिश है हमारी, प्लीज एक सेल्फी तो बनती है सर आपके साथ में सर। ये तो चाहिए। They want a photograph with you, Shahrukh. Would you oblige? Ladies and gentlemen. Do we have a round of applause, ladies and gentlemen, for the heroes of Uttarkashi, Munna, Vakil, Gabbar Singh Negi, Saba Ahmed, and of course the DG NDRF who led from the front, Mr. Atul Karwal. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Sorry. Thank you very much to all the heroes of Uttarkashi. Thank you very much, Shahrukh Saab, for obliging us with a photograph. Look, thank you. Thank you. जाइए, नहीं, नीचे ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। Thank you so much.